Hello guys, welcome back to our channel. This is gonna be the episode 6 of the placement series, and this is gonna be an interesting placement series because in this video we have a third year student, that is Paras Atal, who is placed at a marquee company, that is BNY Mellon. So he has gone a splendid journey throughout the BTech career. So we'll be talking with him and we will be knowing that if a student wants to take the internship in a big company like BNY Mellon, which is a marquee company, during his third year only, so what's the procedure? So I would suggest you to watch the video till the end so that you don't miss out anything. So without any further delay, let's begin with the video. First of all, hi Paras, welcome to my channel. And first of all, congratulations for getting your internship at BNY Mellon. So let's start with a basic intro of yours. Definitely. Firstly, thank you for the warm congratulations, Sidvia. So introduction की बात करें तो I am Paras Atal, third year BTech CSC from SRM University, Kattankulathur. हाँ, मैंने अभी BNY Mellon की इंटर्नशिप क्रैक करी है ऑन कैंपस. टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मुझे डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एमसीइंग, प्रेटी मच इनटू वोकल्स, जहाँ पे भी आपको स्पीच देनी हो तो मुझे वो अच्छा लगता है. एंड आई लव रीडिंग एंड राइटिंग. That's really good to know about you. So first of all, let's start. What was the eligibility criteria for like being an intern? Because you are from third year, right? So what was your eligibility criteria for that? Let's discuss on that now. Correct. So BNY Mellon was the first company to come for internship on campus for the third years. So there was a basic Google form जिसमें 10th में 80% और 12th में 80% और CGPA criteria was 8 if I'm not wrong. Okay. So that was the criteria to fill out the forms. उसके बाद there was a coding round, online coding round था. Okay. हाँ. So how many rounds in and all was there, like from PPT presentation till you got your offer? So in and all, how many rounds were there? So there was one online coding round. उसके बाद 3 interviews थे. So Okay. 1800 people gave the coding round, जिसमें से 46 students got shortlisted for the interview. Okay. Yeah. So like let's talk about the first round of yours. So what kind of questions were there? Like we can discuss on that. Yeah. फर्स्ट राउंड में दे आस्क्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और रेज्यूमे के ऊपर ही था. मतलब जो आपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स करे हैं उसके बारे में आपको कितना इन डेप्थ नॉलेज है वो, प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के काफ़ी डेप्थ में पूछा था. Before that, Paras, let's talk about the coding round that you gave, right? Correct. So what kind of questions were being asked out there? Like what kind of languages were used, or you were given some allowance of different languages, or aptitude questions were there? We will talk about that also. भैया जितना मुझे याद है, बिकॉज 5-6 महीने हो गए, तो 4 कोडिंग क्वेश्चंस थे. लैंग्वेज की कोई बैरियर नहीं थी, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो. 2 क्वेश्चंस भी थे डायनामिक प्रोग्रामिंग की, एक ग्राफ का क्वेश्चन था और एक एरेज का ही था, नॉर्मल पीसी का क्वेश्चन था. Okay. And moving forward, that as you talked about that, mostly your questions were asked through your resume part, right? So being from the third year, like your whole 1 year is left out, then also you managed to prepare your resume in a good way that you cracked a marquee company. That's the top-notch company that comes to our college. So how you managed to prepare, what all projects you put on, or what all skills were the key highlighting factors in your resume? Let's talk about that now. सो मैंने जब मैंने कॉलेज ज्वाइन करा था फर्स्ट ईयर में, तो आई हैड जीरो नॉलेज अबाउट कोडिंग, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही नहीं था कोडिंग से. तो मैंने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से चालू करा था. प्रिटी मच द मोस्ट फेमस कोर्स एंड्रो एनजी विच एवरीवन डज, वो मैंने लिया एंड फिर उससे प्रोजेक्ट्स बनाए, एंड्रो एनजी के कोर्स को फॉलो किया. टॉकिंग अबाउट माई रेज्यूमे प्रोजेक्ट्स जो मेंशन थे, आई डिड वन एनवीडिया का वर्कशॉप हुआ था कैंपस में. तो उसमें भी बिल्ट अ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल यूजिंग योलो, जो एनवीडिया के जेटसन नैनो पे डिप्लॉयड था. तो वी डिड अ प्रोजेक्ट ऑन दैट. तो दैट वाज वन स्टैंड आउट प्रोजेक्ट इन माय रिज्यूमे आई बिलीव, क्योंकि उसमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों यूज था. तो उन्होंने
उस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी डेप्थ में पूछा था। उसके अलावा मेरे रिज्यूमे में एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप टैम्पर्ड कार्ड्स जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड कोई टैम्पर्ड कार्ड्स लेके जाते हैं फेक के लिए, तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने उसको कंप्यूटर विजन यूज़ करके बनाया था। तो प्रोजेक्ट को भी उन्होंने काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस दी, क्वेश्चंस पूछे उसके बारे में। Correct. So, like, for all these stuff, right? Like, you are not taught this much in depth in the college part, right? You might have used some of the other resources from internet, or you might have done all the other courses, like you talked about the NVIDIA one, right? So, any of the references, website, or any YouTube channel that you would specifically talk about that can really help you to crack this company? टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर विजन के लिए तो मैंने लिटरली सर्च किया है, जो वीडियोस आए हैं मैंने वो देखे हैं, क्योंकि कंप्यूटर विजन इज मोर लाइक प्रोजेक्ट बिल्डिंग। मतलब उसमें आप ज़्यादा थ्योरी सीख नहीं सकते, आप प्रोजेक्ट बिल्ड करके सीख सकते। उसके अलावा अगर जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट की बात करें तो वो मैंने फ्री कोड कैम्प और जावास्क्रिप्ट मास्टरी और चाय एंड रिएक्ट, ये 3 चैनल्स हैं फॉलो किए जावास्क्रिप्ट पे। That's nice. So, like, you are a third year student. Again, I'm mentioning that because it's a big thing. So, how you cracked like your mindset to prepare for the interview round, right? You know that this is a big company that is coming, and again, coming from the third year background, like how you managed to make yourself ready. What was the mindset that was going inside your mind? So, let's talk about that. तो सच बताऊं तो माइंडसेट तो मैंने प्रिपेयर किया था, बट लाइक एवरीवन मैं भी नर्वस हुआ था जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए आप जाओगे लाइफ में, तो ये फील कहीं। बट द ओनली थिंग व्हिच वाज रनिंग इन माय माइंड कि इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, लेट्स मेक इट टू द फुलेस्ट। हो नहीं हो दैट्स नॉट इन माय हैंड्स, बट 2 साल जितना कुछ सीखा है आपको बस जाके प्रेजेंट करना है, सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान देना है, तरीके से बात करनी है, रिस्पेक्ट देना है। ये चीज़ था दिमाग में। So, like, throughout your interview part, right, you said like how you speak, your communication skills plays a vital role, right? Correct. And what all are the, other than your resume, what all like can be the things that a student like you should be keeping in mind? Okay, like these are the things that I should be keeping in mind of. I should be knowing this before going to my interview. ओके, सो एक चीज़ है जो बच्चे काफ़ी नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब इट्स वेरी कॉमन कि CGPA इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। करेक्ट। बट इंटर्न्स उठाने के लिए आते हैं तो उनको इतना टाइम नहीं है कि वो एक रेज्यूमे सब कुछ देखे, सो मेनी एप्लीकेशंस फ्रॉम SRM। तो CGPA इज़ द बेयर मिनिमम यू कैन डू टू गेट योरसेल्फ रैंक हायर। तो मेरा CGPA टिल द 4th सेम इज़ 9.78। तो ये मेरे इंटरव्यू में भी काफ़ी हाईलाइट हुआ था। सेकेंड राउंड में इंटरव्यूअर ने काफ़ी पूछा भी था कि कैसे मेंटेन किया ऑल एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं वो मेंटली अफेक्ट करता है, मतलब इंटरव्यू के दिमाग में एक अच्छा इंप्रेशन जाता है इफ़ यू हैव अ डिसेंट CGPA। एक वो चीज़ हो गई। प्लस आई फील कि अगर आप प्रेजेंटेबल तरीके से रहो ना सामने, वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मतलब एवरीवन नोज machine learning, everyone knows the things। 3 साल आप पढ़ रहे हो तो you know the thing, but how you talk is very important। So yeah, Paras, once your coding assessment was done and you were like shifted to the next round, so let's talk about the round 2, what it was all about. Yeah, so second round was entirely based on BSc। उन्होंने आपके DSA मतलब मेरे DSA नॉलेज को कोर तक टेस्ट किया था। तो आई रिमेम्बर द क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा था पेपर पे कोड करने के लिए। तो द क्वेश्चन वाज कि एक ग्राफ बना के दिया था सर ने, इंटरव्यूअर ने, एंड आई हैड टू डू द BFS ट्रैवर्सल ऑफ द ग्राफ, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल ऑफ द ग्राफ। तो दैट वाज आई नॉट से ट्रिकी क्वेश्चन, बट उसके लिए आपको BFS आनी चाहिए, व्हिच इज टॉट इन द 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर बोथ। ओके। हाँ। और एक चीज थी कि उन्होंने पूछा था कि आप एल्गोरिथम्स पार्ट में कितने स्ट्रांग हो। तो I named the algorithms which I know. I named Prim's, Kruskal's, I named Dijkstra, Bellman-Ford. So उन्होंने बोला कि Dijkstra algorithm explain कर। तो what I did was I asked the interviewer कि मुझे पेन पेपर मिल सकता है क्या। तो मैंने उनसे पेन पेपर लिया, मैंने पूरा Dijkstra algorithm एक्सप्लेन किया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सब कुछ, मतलब पूरा ऊपर से नीचे सब कुछ लिख दिया, इतना मैंने सीखा था।
तो उनको डेफिनेटली ये पॉइंट हिट हुई होगी कि जितना पूछा उससे ज्यादा बेटर एक्सप्लेन किया है इसने. Correct. So that was I think that was a positive point from my end. Like you were having the in-depth knowledge of each and Correct. everything, right? Correct. Now after that you cleared the round. There was round 3 also, right? So it was basically the HR round, if I'm not wrong. Yeah, actually it was an HR plus tech round, but Okay. थोड़ा बहुत tech पूछा and then he shifted to HR. Managerial questions, behavioral questions पूछे and that was it. So any demo questions that you can tell, like what kind of questions? मुझसे पूछा था कि है ना placements क्यों? Why not masters? Okay. So it was a tricky question, but I answered कि current goal is placements. Otherwise what life holds we don't know. तो अभी तो मेरा यही target है, तो I am focusing on that. यही मेरा answer. Okay, Paras, before leaving, any message or any tip that you would like to give to your juniors that if you might have got from your seniors, it would be a plus point to you. So yeah, let's share that to the juniors. Correct. So Bhaiya, I would like to say is what makes a great college is the seniors. Like जो आपके connections है, जो आप seniors Correct. से बात कर रहे हो, जो आपके seniors आपको help कर रहे हैं. IIT NITs में senior culture बहुत अच्छा है. टेक पेरेंट्स होते हैं. एंड एक टाइम था जब SRM वाज एट इट्स पीक. 2016 का टाइम था. Correct. तो जूनियर्स को एक मैसेज है मेरी तरफ से कि प्लीज टॉक टू योर सीनियर्स. देयर आर सीनियर्स वुड लाइक टू हेल्प यू. जैसे सिड भैया है जिसको मैंने अप्रोच किया, वैसे ही आप मुझे अप्रोच कर सकते हो. आप और सीनियर्स है उनको अप्रोच कर सकते हो. प्लीज टॉक इट आउट, पूछो डाउट्स. दैट इज इट. That's a really good message that you give, Paras. Like here I don't see that senior junior culture. Like juniors are coming to you asking. We have also done, like to be honest, during my time also I approached many seniors, I talked with them, and during my placement it really helped me out because they were telling me, okay, these are the things that you should be preparing from now. Because many of us what do when we are coming new to the college, in the very beginning we are very enthusiastic and we keep on trying new stuff, but when you're like in your second year, third year, you become a bit lenient. I'm not saying that whole students are like that, but majority of the students become like that. This only key, they are more of a lenient and just enjoying the college life. And at that point of time, your seniors are really helpful because when the placements are near, like to be honest, talking my personal experience also, and Paras can also relate to it, right? We become blank sometimes because, okay, Paras' case is way more different because the knowledge he holds, he's surely doing it from the first year itself. But talking about many of my friends, what we did was, okay, we were a bit lenient, and during our third year also, when I connected with my seniors, and like you get many opportunities like Milan or Arush, you can get connected with the seniors out there also. So they are more than happy. They will let you know, okay, these are the insights, these are the company that you can focus on. So yeah, this is very good point that Paras told to us. So thank you, Paras, for that. So with this, I think we come to an end of the video. Paras told each and everything in a very detailed manner, and once again thank you, Paras, for coming and helping us in making this video. And I would like to let you know that Paras is an amazing speaker. Like he has that verbal communication skill at the peak, and he has a very strong base at the LinkedIn part also. You can surely go, you can ask him. He is more than happy to help you guys out. I'll be giving his LinkedIn profile description in the description part. You can surely click and connect with him. And with this, I hope we come to an end of the video. Each and everything is discussed out, and if you have any queries related to SRM University or any other stuff, you can also connect us on our Instagram channel as well as on our Telegram channel. So don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel. With this, I would like to end the video. Thank you guys.